Welcome friends on YouTube channel Knowledge City with Guruji. Now let's start our today's topic. Today's topic matrices, introduction of matrix and types of matrices. Hello students, how are you? I hope you are enjoying the video lectures. Today we will discuss the new topic matrix. Matrix, first of all we should understand the meaning of matrix. Matrix क्या है? Matrix किसे कहते हैं हम? Matrix is the rectangular rearrangement of some numbers or the functions. Rectangular rearrangement. Re means their sequence a mesh like A, B, C, D, E, F. This arrangement in a brackets is called the matrix. So that numbers or the functions are called here elements. All these terms which is written in the bracket is called the element. जो भी इन ब्रैकेट्स के मिड में हमने लिखा है दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट, उन्हें हम एलिमेंट्स बोलेंगे. एंड मैट्रिक्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय द कैपिटल लेटर. सपोज हेयर कैपिटल ए. So capital A denotes the matrix of these six elements 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, B, C, D, E, F are the six elements of matrix A. So matrix is the rearrangement in form of rectangle shape is called the matrix. Suppose B, if we can write 2, 3, 5, 6, that is also a matrix. So these elements may be any number or the function. एलिमेंट्स में जो ब्रैकेट्स के अंदर है वहां पे कोई न्यूमेरिक हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है या कोई भी फंक्शन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल वन मोर एग्जांपल, सपोज C इज इक्वल्स टू योर sin x, cos x, tan x, sec x. This arrangement is also called the matrix. Okay, so basically matrix is constituted by the two terms, two parts. First the horizontal line, second the vertical line. The horizontal line, this one and 2 horizontal lines, and this 1, 2 and 3 are the vertical line. In this matrix there are 1, 2 horizontal lines and 1, 2 vertical lines. So a matrix is made by the horizontal and vertical line, which are called row and second column. So these rows and columns makes the matrix. Okay, so how can we differentiate the matrix to each other? Like A, B, C, all three are the matrix, but they have some difference. This difference is depends on the number of elements or the number of rows and the column. For example, in the first matrix A, how many rows? First and second row. And how many column? 1, 2 and 3 column. So that matrix will be written in the form of a 2 cross 3. 2 rows and 3 columns. Here 1, 2 rows, 1, 2 columns. So we can write 2 by 2. Matrix B have the dimension 2 by 2. Similarly, matrix C also have dimension 2 by 2. So these representation of dimension in form of their rows and column is called the order of a matrix. It is the order of matrix. What is the order of matrix? It means we will represent in the form of row and column. So row and column, and we will say generally order is represented by the symbols variables m cross n. M denotes the row and denotes the column. Okay, so every matrix have their order. The order depends on the number of row and the column. वो कुछ भी हो सकता है. Suppose आपके पास given है कोई 1 cross 1. It means 1 row 1 column only it have. Suppose we have given 1 cross 2. So 1 row and 2 columns are here. Suppose we have given 2 cross 3. So 2 rows and 3 columns have given to us. So that is the order of the matrix. Understand? So this order of matrix denotes the number of rows and columns present here. So we can write a matrix, we can represent a matrix like that: A11, A12, A13, A14,
continuously A21, A22, A23, A24 or A31, A32, A33, A34 like that here. So that is the general representation of matrix. It means 1 1 shows first row first column, 1 2 shows first row second column, first row third column, second row first column, second row second column, second row third column. So that is a formation of a matrix. So generally we can write the address of element by the I and J. A of I and J, I row, J column. ठीक है? So that is a symbol of element. How can we represent the element? Element represented by the A of I and J. I shows the rows and J shows the column. Let me take an example. Suppose the Aij is given to us 2i plus 3j. Aij, it means the element of matrix is denoted by the 2i plus 3j, and given to us the matrix A has the order 2 cross 2. 2 cross 2. It means 2 rows and 2 columns. So question is says find the elements or matrix of the A. So it means A11 11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. कितनी रोज है यहाँ पे? 2 रोज है और 2 कॉलम है. तो हमने बात किया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम. तो 2 into 1 plus 3 into 1. I और J के प्लेस पे 1 and 1. So what will be value here? 5. A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. ठीक है, टोटल 2 कॉलम्स हमारे पास में है तो सेकंड कॉलम लिया हमने. 2 into 1 plus 3 into 2. It becomes the 8. ठीक है. नेक्स्ट A21. So second row और first column. 2 into 2 plus 3 into 1. 2 to the 4 plus 3 7. And A22. So 2 into 2 plus 3 into 2. It becomes the 10. So the matrix will be written as first row, first column, first row, second column, 5, 8, 7, 10. It is your required matrix. Okay. So we have given here Aij equals to 2i plus 3j. Aij क्या है? एलिमेंट शो कर रहा है और ये उसका सॉल्यूशन है, एड्रेस है. ऑर्डर्स क्या है मैट्रिक्स के? 2 and 2, 2 by 2. 2 रोज 2 कॉलम. तो 1 by हमने पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम पुट किया और ये आपका मैट्रिक्स बन गया. ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड सॉल्यूशन है फॉर फाइंडिंग द मैट्रिक्स इफ वी आर गिवन देयर एलिमेंट. ओके ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सम मैट्रिक्स. स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स है कि दैट टाइप डिपेंड्स ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. बेसिकली ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, हाउ मेनी रोज एंड कॉलम, कितने रोज एंड कॉलम है, दैट विल डिफाइन द डिफरेंट टाइप, डिफरेंट कैटेगरी. ओके, तो फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट टाइप इज द कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स एज द नेम हमको पता पड़ रहा है. कॉलम मैट्रिक्स का मीन्स क्या है? द मैट्रिक्स कंटेन्स बाय द ओनली अ कॉलम, जिसमें सिर्फ क्या होगा? एक कॉलम हो गए. हाउ मेनी रोज, नंबर ऑफ रोज कितना है, दैट इज नॉट अ any restrictions here, just we have given the only one column. Suppose 5 6 8. It is the order of 3 cross 1, 3 rows 1 column. So that matrix contains the only one column. It is called the column matrix. One more example, suppose B is equals to 2. How many rows here? Only 1. And how many column? 1. So it is also the column matrix because it has the only one column here. Okay, that is your column matrix. Now second, row matrix. Row matrix, as the name, it consists only by the single row. Only one row is present here. So that matrix have the order 1 by 4. So it is called the row matrix. It consists only a single row. इसमें सिर्फ एक ही रो है. कॉलम कितना है, that is not a matter. वो कितना भी हो सकता है. Suppose B is equals to 5 and 8. It is a 1 cross 2, 1 by 2. So it is also a row matrix. Okay. Third one is the square matrix.
कौन सी, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ कंडीशन है स्टूडेंट, इफ m क्रॉस n इज इक्वल टू n क्रॉस m, m क्रॉस n इज इक्वल टू n क्रॉस n, और सिंपली वी से m इक्वल टू n। अगर आपके पास में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल है, इफ द मैट्रिक्स हैव नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, इट कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। It is the order of 2 by 2. So rows and column both are the equal. So it is called the square matrix. Or we can say similarly here 3 0 5 2 minus 1 3 8 4 5 8 0. What is the order here? 3 cross 3. So it is also a square matrix. Okay. Next type is the diagonal matrix. Diagonal matrix means a matrix in which only diagonal elements are the non-zero. It means क्या होगा, केवल diagonal elements non-zero होंगे और remaining elements क्या होंगे, zero होंगे. For example 5 0 0 0 2 0 0 0 1, order of 3 cross 3. So here diagonal elements are the non-zero, remaining are the zero. It is called a diagonal matrix. Suppose be 3 0 0 5 2 cross 2. So it is a diagonals are non-zero, remaining are the zero element. So diagonal matrix are square matrix in which only diagonal elements are the non-zero. Clear दिख रहा है आपको, square matrix है 3 cross 3, m और n are same, 2 by 2, m and n are same. ठीक है, diagonal matrix is always a square matrix in which only diagonal elements are non-zero, remaining are the zero. Clear? Next is scalar matrix, a matrix in which all the diagonal elements are the same. A square matrix in which all diagonal elements are same. 1 2 3, these are the 3 diagonal elements which are the same. Order of 3 cross 3. Suppose be root 3 0 0 root 3, order of 2 cross 2. So in this condition the all diagonal elements are the same. So it is called the scalar matrix. Is it clear? Next category is the identity matrix. Identity, as you know already, identity means the one, unique. So all the diagonal elements are one. If a matrix have the all diagonal elements are 1, it is called the identity matrix. In this example, the 1 1 1, that all the diagonal elements are the 1, it is called identity matrix. Or we can write 1 0 0 1 2 cross 2. So these are the diagonal elements which have the value 1 only. So that is your identity matrix. Okay, the next is the zero matrix, a matrix in which all the elements are the zero or null. It is called the zero matrix or the null matrix. Zero matrix or null matrix may be of any order. It is not necessary it is a square matrix. It may be of any order, 2 by 2, it may be here 0 0 0 0 0 0 2 by 3. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो हम कितने भी ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स बना सकते हैं. इट ऑलवेज हैव द वैल्यू 0. सारे एलिमेंट्स क्या होंगे इसमें, 0 होंगे. ओके, तो दीज आर सम स्पेशल कंडीशंस और टाइप ऑफ द मैट्रिक्स डिपेंड्स ऑन देयर ऑर्डर एंड द टाइप ऑफ एलिमेंट. ओके, नाउ वी विल डिस्कस वन मोर टॉपिक हियर, द कंपैरिजन ऑफ अ टू मैट्रिक्स. We will say here the equality of a matrix. कि how when we can say the matrix are the equal. हम कब पता पड़ेगा कि टू मैट्रिक्स हमारे पास में इक्वल है. A and B are the two matrix will be equal if first point same order, both the matrix should have the same order. दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो. इट मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, दोनों में इक्वल होने चाहिए. एंड सेकेंड कंडीशन, each corresponding element should equal. Each corresponding element should be equal. In this case, we can say the two matrices are the equal. For example,
a matrix A 1 2 4 5, matrix B 1 2 4 5. It is ordered 2 by 2, 2 by 2, and we can say 1 equal to 1, 2 equal to 2, 4 equal to 4, 5 equal to 5. So the matrix A is equals to matrix B. Understand? Suppose we have given a matrix A 2 3 5 4 3 2 2 cross 3, and matrix B 2 3 5 4 3 2 3 cross 2. So आपको लग रहा होगा कि सब एलिमेंट्स सेम सेम से है, ठीक है? नो. First of all, order 2 cross 3 and 3 cross 2, 2 by 3 and 3 by 2, order is not equal, so these matrices are not equal. ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, ठीक है? तो फर्स्ट होना चाहिए आपके पास में सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो. सेकंड कंडीशन कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो भी क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड द इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स. दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी, इक्वल मैट्रिक्स होंगी, ठीक है? वाइस वर्सा, इसी का रिवर्स बोलते हैं कि इफ द टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर ऑर्डर विल बी सेम एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी सेम. अगर दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल है तो उनके जो भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे. फॉर वेरी सिंपल एग्जांपल, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी और ए का वैल्यू गिवन है x 2 3 y, बी का वैल्यू गिवन है 5 z 3 2, इस टाइप से आपको कुछ वैल्यूज गिवन है. Question says if A and B are the equal matrix, then we should know here the each corresponding element should equal to each other. So we can say x equal to 5. x किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा. 2 equal to z, 2 z के इक्वल होगा. 3 and 3 are the equal, clearly seen, and y is equals to 2. So y equal होगा 2 के. So that is a procedure to find the unknown values in equal matrices. Understand? So that is your method to show the equal matrices, and it is your topic today. Now you should start your assignment, and if you have any problem you should write your queries in comment box or WhatsApp on the given number. Okay, bye bye.